So Maharaj and many leaders, ISKCON leaders, were at Pune for the GBC annual GBC meetings, and Maharaj is one of the first ones to give us his association out of the entire leaders of all the leaders who had come to Pune. So we are very thankful to Maharaj. I'll read a brief introduction of Maharaj. His name is Kavichandra Swami Maharaj. Met the Hare Krishna devotees in 1967 and was initiated by Srila Prabhupada in 1971. He joined the temple in Tucson, Arizona, and since that time he has served in various capacities in the United States and around the world. Some of these services include from 1973 until 1977, he was distributing Srila Prabhupada books to libraries, universities, and individuals, including leading a book distribution team called the Radha Damodar Sankirtan Party. Preaching Krishna consciousness in Fiji, filling in as the general manager for the Radha Rasbihari temple in Juhu, India, and as temple president in Tokyo. In Japan, in 1982, Kavichandra Swami Maharaj took his sannyasa vows, lifelong celibacy, and a vow to fully serve his spiritual master with mind, body, and words. 5 years later, in 1987, Maharaj started to serve as a GBC member for Japan. Gradually, his GBC responsibilities expanded from Japan to culturally diverse places such as Thailand, Indochina, Indonesia, Greece, and West Africa. Kavichandra Swami Maharaj is also a committee member of the GBC Executive Committee, ISKCON Law Committee, and Revision Committee. Maharaj has a special interest in book distribution and Harinam Sankirtan, and he writes of his faith in Srila Prabhupada on the topic of Harinam. Maharaj writes, 1965 was an auspicious year for the earth, since that is the year that His Divine Grace Abhaycharanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada arrived in the United States of America. The USA was called the land of the free and the home of the brave, but at that time, many felt trapped and fearful. Srila Prabhupada was fearless. He came to establish a worldwide Sankirtan movement which would spiritualize and liberate all who contacted it. No one would have suspected that within a few years the name of Krishna would become household words and that devotees would be dancing and chanting on all the main streets of the world. Maharaj invests time in devotee care by writing articles, participating in conferences, and vigorously encouraging others to put effort into making it a priority. As a traveling preacher and the initiating spiritual master of many disciples in his GBC regions and beyond, he naturally sees the whole world as his family. He does have a biological family members as well, a daughter, Mona Aim, and her two daughters, Grace and Faith, who regularly attend temple functions in Los Angeles. So let us welcome His Holiness Kavichandra Swami Maharaj at ISKCON BCEC by once chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. How much time do we have? Time? It's 7:30. No, how much time do we have? 8:15. Jai Radha Madhava Kunja Vihara Jai Radha Madhava Kunja Vihara Gopijana Balava Girivardhari Gopijana Balava Girivardhari Jamuna Tira Vanachari
Yamunatiravanachari Jai Radha Madhav Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivara Hari Gopi Jana Balava Girivara Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhaktivedanta ki jai. And what is this place? Huh? Another one, huh? Education and culture. Good. That's what the world needs. Yeah, who's translating? Hare Krishna. He said you start on Ekadasi. But Vrindavan tradition is full moon, so we follow that. तो प्रभुपाद ने जब से पहली बार जिक्र होता है और पूर्णिमा में खत्म होता है तो लंबा होता है. But anyway, many special events happen besides that every day is special. तो बहुत सारे विशेष इसमें लीलाएं हुई थी इस माह में. Prabhupada compared it to like a shop, they have a sale. तो प्रभुपाद ने कहा था कि जैसे एक दुकान है जिसमें सेल लगी है, उससे उन्होंने इसकी तुलना की थी. They sell everything cheap. सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती मिलती हैं यहाँ पे इस दुकान For में. whatever reason, to get more people into their shop or whatever. So the Kartika is like that. You get more for your effort. तो कार्तिक मास में ऐसा है कि थोड़े से प्रयास में भी अधिक उसमें लाभ प्राप्त होता है. So even if you just offer a lamp every day, which is a very simple thing, it's so much benefit. And there's so many lists of how much benefit it is. तो एक थोड़ा सा एक दिया भी हमने रोज़ अर्पण किया तो उससे बहुत लाभ मिलता है. But I was thinking about it, and so one very special thing that happens in the Kartik is Srila Prabhupada's disappearance day. तो इस कार्तिक मास में सबसे विशेष मेरे हिसाब से क्या है कि श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस आता है उसमें. तिरुभाव दिवस आता है. Tirubhava. So maybe because we come from at least in America, the birthday is the big day, But in Gaudiya tradition, the disappearance day is a much bigger festival. तो तो पूर्व अमेरिका में जो जन्मदिन दिवस होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन गौड़िया वैष्णव में जो तिरुभाव दिवस होता है वो बहुत विशेष माना जाता है. So we were talking about, because now many new gurus, their appearance day is bigger than ceremony, bigger than Prabhupada's. Many of the
second gurus, Prabhupada's disciples, their appearance day is celebrated very big, more than Prabhupada's. तो अभी जो प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनके जो अपीयरेंस डे है, आविर्भाव दिवस है, वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. But especially Vrindavan and Mayapur, Prabhupada's disappearance day is a really big festival. It's a big international festival. परंतु वृंदावन और मायापुर में प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. And one of the big Goswami friends there in Vrindavan, he was saying Prabhupada chose somehow to leave during Kartik and in Vrindavan. तो एक गोस्वामी उनके मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि प्रभुपाद ने ये चुनाव किया था कि वो कार्तिक मास में वृंदावन में अपना देह त्याग करेंगे. So I was thinking, everybody should write something, some kind of glorification or offering to Prabhupada on this, for this disappearance day. तो हम सोच रहे थे कि मैं लिखूंगा एक स्तुति प्रभुपाद के, एक स्तुति उनके तिरुभाव दिवस पर. Because if it weren't for Prabhupada, even though you're Indian and Hindu, you wouldn't know much about the whole Damodar Mats or anything, or even Vrindavan. क्योंकि आप भारतीय होने के बाद भी प्रभुपाद अगर नहीं होते तो हमें ये दामोदर मास, कार्तिक मास के विशेषता के विषय में कुछ जानकारी नहीं मिल सकती थी. Even I came to India first time, it was in the late 70s, and I'd meet people in Delhi, they'd never been to Vrindavan, they hardly knew about it. जब मैं स्वयं 1970 में ऐसे मिला जो भारतीय थे लेकिन वो वृंदावन कभी गए ही नहीं थे. And Calcutta, didn't go to Mayapur. Mayapur was nothing. Vrindavan, at least something was there, Mathura, but Mayapur there was nothing. मायापुर तो कुछ भी नहीं था, कोई नहीं जानता था मायापुर की ख्याति. But due to Prabhupada's preaching, now Mayapur, Vrindavan and Mayapur both, you can't keep up with all the new buildings and all the Delhi people are buying घर खरीद लिया है, वहाँ पे फन लैंड वगैरह भी बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैल गया है उसकी ख्याति. कुछ हम नहीं सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा ही है कि वो प्रसिद्ध हो रहा है. And Krishna Balaram Temple has become, one of the most visited temples in Vrindavan, I think second most or something. और वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर जो है सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं अभी. And so many thousands of Prabhupada's books are distributed every day, and so much prasadam, and so many people hearing the kirtan 24 hours. हजारों ग्रंथ प्रभुपाद के वहाँ पे वितरण होता है, कितना प्रसाद का वितरण होता है और कितने कीर्तन इत्यादि में लोग भाग लेते हैं. I think now ISKCON has something like 600 temples in India, at least that they know about. We don't even know about all of them. अभी ISKCON में 600 से अधिक मंदिर भारत में ही हैं, उससे अधिक भी होंगे लेकिन जानकारी 600 की ही है. So this is all due to Prabhupada's desire, just manifested all. ये सब प्रभुपाद की इच्छा ही थी जिसकी वजह से ये सब प्रकट हुआ है. So we should, remember that. And Prabhupada's. वृंदावन में वो तो अपने आखिरी सांस तक वो प्रचार कर रहे थे. So it's we just heard this morning. वो प्रभुपाद से मिले हैं, बहुत फेमस है वो. And he said, in history, historians, they look for a comparison. They see some to other. किसी और के साथ तुलना करने का उनका है. Christ and Muhammad, as far as influencing the world. तो प्रभुपाद के जो प्रभाव है उसके द्वारा वो एक ही पाए कि प्रभुपाद की तुलना. His own country, he preached his own language. परंतु उन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट ने भी अपने ही देश में और अपने ही भाषा में उन्होंने प्रचार किया था. But then his followers, they spread more, much more. परंतु जीसस क्राइस्ट के जो अनुयायी थे उन्होंने फिर बाद में काफ़ी पूरे संसार में प्रचार किया. And Muhammad had his own family and whatever. और मोहम्मद में केवल अपने परिवार के अंदर उन्होंने प्रचार कर पाए. Prabhupada was all alone, with no support. प्रभुपाद तो केवल अकेले थे. एक विदेशी
स्थल में थे। And in the first 50, this only 50 years, has grown all over the world, so big. और केवल 50 ही साल में पूरे संसार में ये फैल गया है ISKCON। So he said, you know, it's even more spectacular than anyone else. This is a historian, he's a big scholar, he's not a devotee. तो ये Not जो like है, I was saying it, my guru, that he's just saying it as a scholar. तो ये जो बातें हैं ये एक बहुत बड़े विद्वान ने कही हैं, इतिहास के क्षेत्र में जो विद्वान हैं उन्होंने बताई है। So Prabhupada said many times this Krishna consciousness will take over the world. प्रभुपाद ने कई बार कहा कि कृष्ण भावनामृत जो है पूरे संसार में फैलेगा। And I remember when I first joined, we were always talking like that, you know, we're going to take over the world. तो हमने जब पहली बार ISKCON को ज्वाइन किया बहुत पहले, तब हम इसी के विषय में बात करते थे कि ISKCON सब जगह फैल गया। But then we start to think, well, the world's taking us over, we have to fit in, you know, but we can't be normal, we can't be just like them, we want to change them, everybody. We want a revolution. तो हमें इसके लिए क्रांति चाहिए, ये सब जगह हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। A spiritual revolution. ये आध्यात्मिक क्रांति। And that's just by, Bhagavatam says that, by pouring the nectar of Govinda, the Krishna Katha, into the ears of the sleeping souls and wake them up. जो सोए हुए जीव हैं उनके कर्ण में ये जो कृष्ण कथा है उसको बौछार करके ही ये संभव हो सकता है, ये क्रांति। That, so devotees asked Prabhupada, how would we take over the world, you know? तो भक्तों ने प्रभुपाद से पूछा हम पूरे संसार पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। And at that time, you know, there was maybe 100 temples in the world, उस समय 100 मंदिर थे पूरे संसार 5,000 or में 10,000 devotees. और 10,000 So कुछ it's a little hard भक्त to थे। see how you're going to take over the world. तो उस समय समझ में नहीं आ रहा था पूरे संसार पर कैसे हम काबू पा सकते हैं। Prabhupada said this will take, it won't be a revolution, won't be war, you know, any of that kind of. तो उन्होंने कहा था कि क्रांति होगी, कोई युद्ध होगा। Not a political thing, you know, you make a political party and you campaign and get elected or something. ये कोई राजनीतिक प्रभाव द्वारा नहीं होगा। But by the Sankirtan, by the books and the spreading of the holy name, it's influence in the consciousness of the world. परंतु कैसे होगा Uplifting. ये ग्रंथ वितरण और संकीर्तन के द्वारा ही लोगों के हृदय में ऐसा परिवर्तन लाया जा सकता है। So in 50 years, we're seeing like so many temples, especially in India, so many people reading Bhagavad Gita, and vegetarian movements all over the world did yoga. तो उस समय जब प्रभुपाद आए थे अमेरिका में, तब कुछ ही लोग योगा के विषय में जानते थे। Now it's everybody, you know, did it. He left Vrindavan. He was situated nicely in Vrindavan, respected. You know, most people go there to retire. बहुत लोग जब वृंदावन जाते हैं अपना रिटायरमेंट के लिए ही जाते हैं। But he left. Even before he left for America, he was going to Delhi to get the books printed. लेकिन वो तो जब जाते थे, Living in Delhi, and that, if you've been there to Chippewater, you know the road is about this wide going in. तो वहाँ जब वृंदावन में रहते थे फिर भी वो बार बार वृंदावन छोड़ के दिल्ली आते थे अपने किताबों का पब्लिश करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए। And he had a very small room और छोटे with से a कमरे में dome over रहते the थे, deity in the middle of it. बहुत छोटे से कमरे में He रहते थे was translating और वो ट्रांसलेट करते थे। before he could finally get to, you know, go to America. So इससे पहले कि वो ग्रंथ लेकर अमेरिका के लिए जा पाते। and going with no money, and he didn't know anybody. और उनके पास ना कोई धन था, ना ही किसी को जानते थे। He had a sponsor, but he didn't know the man. He didn't know when he got there what was going to happen. बस एक प्रायोजक थे वहाँ पे, लेकिन उनके बारे में भी वो अधिक जानते नहीं थे। But somehow they had arranged for a bus to take him to their house.
लेकिन उन प्रायोजक ने किसी तरह एक बस का आयोजन किया था जिस पर बैठकर उनके घर तक जा पाए। Everyone should read the Lilamrita to see, so we प्रभुपाद can get लीलामृत सभी को inspired. पढ़ना चाहिए। The way we can pay back is to do whatever we can to carry on the mission. तो उस समय प्रेरणा मिलेगी कि इस मिशन को हम कैसे आगे बढ़ाएं। But anyway, during Kartika, of course, we want to, whatever, most devotees try to intensify their devotional activities. तो जो भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं इस कार्तिक मास में हमें उसको और तेज करना चाहिए। So many go to Vrindavan or they do Parikrama कई लोग वृंदावन in जाते हैं, वहाँ पे Vrindavan. परिक्रमा They करते हैं, just chant all day or read or whatever. And we try to do more, but at least offer a flame every day. तो कई लोग तो पूरा दिन भी वहाँ पे जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन कम से कम एक दिया तो हमें रोज अर्पण करना ही चाहिए। Prabhupada, at least what Prabhupada actually gave us was, as an instruction, he just said, प्रभुपाद ने आदेश दिया था कि ऐसा एक दिया हमें अर्पण करना चाहिए और दामोदर अष्टक गाना चाहिए। तो उसी समय पर हम जितना हम करेंगे तो पूरे के लिए हम कुछ स्थिति है, मनस्थिति है। Vrindavan is not exactly a place because it's not in the mature world. और वृंदावन एक भौतिक जगत का कोई जगह नहीं है। We can take the bus and go there, but we might not be there. हम बस लेके अंदर जा भी सकते हैं लेकिन वहाँ पे नहीं होंगे। To enter Vrindavan, we have to have a Trinata Pisuni, Trinata Todora Pisuna. Aman enter Vrindavan, and that can be anywhere. Anywhere where Krishna is being worshipped, anywhere where devotees are getting together to chant and hear about Krishna. जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तब तक वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सकते। और कहने के लिए तो सभी जगह फिर वृंदावन के समान ही होगा यदि हमारी चेतना वैसी रही तो। So that can be here, can be anywhere in Pune. तो हम कहीं भी हो सकते हैं, पुणे में किसी भी जगह पर। So Pune became very famous some years ago because of one so-called Bhagavan. तो कुछ वर्ष पूर्व पुणे बहुत ही फेमस हुआ था एक तथाकथित भगवान के वजह से। I came to Pune for the first Rath Yatra. तो पहले रथ यात्रा के लिए मैं पहली बार पुणे आया था। And that Bhagavan left the next day, I think. तो अगले दिन भगवान चल Something बसे। like that. Very, Lord Jagannath didn't tolerate. But now there's so many real Vaishnavas are worshipping real Bhagavan. तो अभी बहुत सारे असली वैष्णव हैं अभी। All of you and so many more. अधिक बहुत सारे हैं। So many devotees in Pune. इतने सारे भक्त हैं अभी पुणे में। And such a beautiful temple, and I hear there's many temples around here. Yeah. और मैंने बहुत ही सुंदर मंदिर देखा और मैंने सुना है कि बहुत ऐसे मंदिर हैं। And that's what Prabhupada wanted, like not just a temple and a deity, but everything. So you can just live, full Krishna conscious life. You can get all your food, you can get everything. वो यही प्रभुपाद चाहते थे, ऐसा नहीं चाहते थे कि एक ही जगह पे हो और सब खाना पीना सब वहीं पे हो। And we need all over the world. We want this is happening in many, many places. पूरे संसार में ऐसा हो रहा है। So anyway, Kartik, please take advantage of whatever you can do. इस कार्तिक मास में लाभ उठाइए जितना भी आप कर सकते हैं। But just offering this lamp, is something really special. कम से कम जैसे तैसे एक जो दिया है उसको ज़रूर अर्पण कीजिए। And this Damodar Ashtakam song is very, very wonderful. और ये जो दामोदर अष्टक है ये बहुत ही विशेष है। And we should carefully study the meaning of it. और हमें उसका अर्थ भी समझने का प्रयास करना चाहिए। It covers the whole Leela. ये पूरा एक लीला है जिसका वर्णन हुआ है। And it's really about Yasoda, Yasoda's love for Krishna. और यशोदा मैया की कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रतीक है। Which the intensity of Yasoda's love for Krishna is something like Radharani's. It's not ordinary.
और ये कोई सामान्य प्रेम नहीं है, but different rasa, but such intense love for Krishna. इतना तीव्र भक्ति का ये प्रतीक है। And Krishna is such intense love for her. और कृष्ण की भी प्रेम जो है उतना ही And तीव्र his है, reciprocation, with his devotees. और ये ऐसा ही कृष्ण का आदान प्रदान अपने भक्तों के साथ होता है। And then the author is praying in the same way that Prahlad prayed, Dhruva Maharaj prayed. So many great devotees pray. Lord Chaitanya, I don't want anything. What is the use of any benediction? तो जैसे बहुत सारे बड़े बड़े Any भक्तों material ने, benediction. जो बहुत बड़े भक्तों ने, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उन सब ने जैसे प्रार्थना करी, उसी तरह ये सत्यव्रत मुनि ने भी प्रार्थना करी है कि इन सब चीज़ों का क्या लाभ, भक्ति ही सबसे बहुमूल्य है। Even up to Vaikuntha, वैकुंठ which तक is भी, not material, but even that, you just want to see the face of Krishna. कहते हैं कि वैकुंठ में वास से भी अधिक एक क्षण अगर कृष्ण को देख पाए तो वो भी अधिक It's really लाभदायक showing है। us, what is a really high devotion. ये बहुत ही उच्च स्तर की भक्ति का And that's प्रदर्शन how है। Dhruva prayed, Prahlad, I can't remember, so many, I was just reading fourth canto, and same prayers are there, the same mood of the great devotees. We just want to be with devotees, we want to hear about Krishna, want to see Krishna. बस हमें कृष्ण के विषय में कथा सुननी है और भक्तों के साथ रहना है, उनके संग में रहना है, यही इच्छा है और यही बात प्रकट करी है ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज और अन्य भक्तों में। Krishna reveals himself according to, our service attitude. तो ये सेवा भावना बहुत आवश्यक है। But also, then the same Damodar Leela, then there's the Nalakuvara and Manigriva. इसमें नलकुबेर और मणिग्रीव के विषय में भी बताया गया है। And they were so-called cursed by Narada Muni, but really it was a blessing. वो कहने को तो श्रापित थे नारद मुनि द्वारा, लेकिन उनको असली में देखा जाए तो उनको ये वरदान मिला था। So when they were liberated from the tree body and they prayed to Krishna, तो पेड़ के जो देह है उससे उनकी जब मुक्ति प्राप्त हुई थी तो and they उन्होंने had very, कृष्ण से प्रार्थना करी। exalted type prayers, very, wonderful. बहुत ही सुंदर उनकी प्रार्थनाएं हैं, Because they had been witnessing Krishna's childhood pastimes. क्योंकि वो पेड़ के शरीर में रहते हुए भी भगवान की लीलाएं, जब वो बाल लीलाएं देख रहे थे। But then Krishna said, I really have nothing to do with people like you. लेकिन कृष्ण ने कहा मुझे आप जैसे लोगों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। And they were debauchee, they were drunkard, and, they were in Kailash, but they're just partying in the Ganga with the girls. हाँ, वो तो कैलाश में कुछ स्त्रियों के साथ वो पार्टी कर रहे थे। And there's a very important couple sentences there. It says that, like they were in the Ganga, but they weren't getting any spiritual benefit. तो बहुत ही मुख्य बात यह है कि गंगा में होते हुए भी उनको कोई भी आध्यात्मिक प्रभाव नहीं पड़ रहा था उन पर। And it says, because success in anything, material or spiritual, it depends on your consciousness. तो किसी भी Why am I doing that? किसी भी क्षेत्र में अपनी चेतना पर निर्भर करता है कि हम सफल हुए कि नहीं। But Narada Muni, pure devotee and so compassionate, he took compassion on them. तो नारद मुनि शुद्ध भक्त थे, इसलिए उन्होंने उन पर करुणा दिखाई। So Krishna says, but Narada Muni asked me, to benedict them. आप मुक्त करने को कहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। So we should all understand, because Srila Prabhupada asked Krishna, please, these people are all suffering so much. Like he wrote when he first was in America, not even in America, but he was actually he'd gotten off the boat and he got some little darshan of America. तो ये वैसे ही हमें समझना चाहिए। He went somewhere around Boston, I don't know exactly. But he did get, maybe took a taxi or something. So he saw something. तो वैसे ही हमें समझना चाहिए कि हम में भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन प्रभुपाद की करुणा के वजह से ही हमें इसमें
एंट्री मिला है। और प्रभुपाद ने जब पहली बार अमेरिका में उतरे थे तो उन्होंने टैक्सी में कहीं पे थोड़ा घूमे और उन्होंने पूरा बॉस्टन में उन्होंने पूरा अमेरिका के बारे में झलक देख लिया था। And he saw the meat shops and whiskey shops and the degradation. और उन्होंने वहाँ पे शराब की Hadn't seen दुकानें that kind of stuff in Calcutta. ऐसी Calcutta, even Bhakti Charma said when he was a child, Calcutta was such a nice city, so peaceful, and his parents never worried, even if he didn't come home at night, he stayed somewhere else. Nobody worried. तो Everything was so nice. भक्ति चारू महाराज कह रहे थे कि जब वो छोटे थे तो कलकत्ता बहुत ही अच्छी जगह थी, वहाँ पे आराम से लोग इधर उधर घूम सकते थे, किसी बात का डर नहीं था। And then he wrote, I don't know why you brought me to such a terrible place. तो प्रभुपाद ने फिर लिखा भगवान को कि आपने मुझे ऐसे जगह पर क्यों लेकर आ गए। These people are so degraded. तो इतने पतित लोग हैं यहाँ पे, passion, ignorance. सब रजोगुण और तमोगुण के शिकार हैं। But he said, I know if they will hear the message of Srimad Bhagavatam, and they can change. लेकिन मुझे पता है कि यदि वो भागवत की कथा सुनेंगे तो अवश्य उनमें परिवर्तन आएगा। And then he quoted some slokas, and then he said, just as you like Krishna, you make me dance, make me dance, make me dance. फिर उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना Not करी chow, कि not chow, not chow. जैसे आप मुझे चाहें वैसे नचाइए। As you like, it's up to you. I don't have any ability. I only have faith in the holy name, Prabhupada. मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, बस मुझ में श्रद्धा है ये हरि नाम पर। And that humility, but everyone is thinking, even then I guess, America must be like Swarga, But Prabhupada said it's a terrible place. तो कुछ लोग सोचते हैं कि अमेरिका स्वर्ग जैसा होगा, उन्होंने कहा था नहीं ये तो नर्क जैसा ही लग रहा है। But actually he took great pleasure in it because there's so much opportunity to preach. अवसर था प्रचार करने का। And now if we think back to the whole process, how Lord Chaitanya was arranging everything. तो उन्होंने कहा कि ये चैतन्य महाप्रभु ही सारा आयोजित कर रहे थे। You don't have to go back so far, but like the British, they were conquering everywhere. So everywhere in the world, somebody spoke English. तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंग्लिश छोड़ के जाते थे। Now the reason British did that wasn't very good, but they thought even Sanskrit's just like monkey talk. Only English is good. लेकिन उनका जिस विचार की वजह से उन्होंने ऐसा किया वो कोई नेक नहीं था। But therefore Prabhupada could go anywhere and find someone to translate the books. तो इसीलिए प्रभुपाद जहाँ भी जाते थे उनको We कोई तो didn't have मिल to जाता learn था, languages. It's always somebody could speak English. कोई तो मिल जाता था जो इंग्लिश बोल पाता था Everywhere in और the इसलिए world. अनुवाद का कार्य चलता था उनका। So then, Bhaktisiddhanta was preaching in India, but he told Prabhupada, you should go to the Western world, English speaking. तो उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो स्वयं तो भारत में ही प्रचार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद को आगे आदेश दिया कि जहाँ पे अंग्रेजी बात करते हैं उन देशों में जाके आप प्रचार कीजिए। So Prabhupada, he tried in India for a long time, and he got one disciple who wasn't very strict. तो प्रभुपाद ने भारत में भी बहुत समय तक उन्होंने प्रयास किया और बहुत मुश्किल से एक ही उनको अनुयायी मिला जो भी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था। And a few, very exalted type people, they gave enough money to print the first books. और कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने Otherwise, not much. उन थोड़ा दान दिया ताकि वो अपने पुस्तकों का ग्रंथों का At least, प्रकाशन कर पाते। if you're going by results or something. But then the Americans in English came back to India, and now look what we see. लेकिन जब उन्होंने पश्चिम देशों में प्रचार किया, I just was thinking about today that obviously it was a plan. Bhaktisiddhanta knew that was going to happen. लेकिन वहाँ से जब यहाँ पे आए लोग तो फिर How to देखिए preach in India, you have to bring because they're looking at the American and British must be something special. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पता था And somehow they took to it. कि अगर अंग्रेजी में बात करने वाले विदेशी लोग यदि इस
पद्धति को स्वीकार करते हैं तो भारतीय उनको देखकर ज़रूर नकल करके कम से कम इस पद्धति को स्वीकार करेंगे. And Americans are just British anyway, you know, at that time, you know, many. But they have this tendency to, you do like I do, you know. So they came and they got all over the world, you know. Chant Hare Krishna. तो जब वहाँ Read the पे book. And somehow now we have temples everywhere. तो ऐसे जब आए तो उन्होंने सबको ये जपा करवाया और अभी हर जगह पे मंदिर है. Can't keep up. In India, the you know, the leaders in India, they have no idea how many temples they have. तो अभी यहाँ के जो Just नेतृत्व begging, कर रहे हैं, please report, you know, because everybody's starting a temple and a sub-temple and a satellite temple and a preaching center and a base center. And तो अभी इतने सारे मंदिर हैं, यहाँ पे किसी को शायद पता भी नहीं है कितने होंगे. so this group is much bigger than all the devotees in Japan. तो कह रहे हैं जापान में जितने भक्त हैं पूरे जापान में उससे अधिक तो इस रूम में ही दिख रहे हैं. And Japan has 120 million people. और जापान में 120 मिलियन लोग हैं. But different, 12 different soil. करोड़. I met a devotee last night who has a small farm outside of Pune. एक भक्त का यहाँ पे एक फार्म भी है. And he said he threw a mango seed out or something, and after a little while, a tree was growing. तो वहाँ पे He उन्होंने didn't plant it even; he just threw it on the ground. तो उन्होंने कोई कष्ट नहीं किया. उन्होंने बस एक आम का एक Different गुठली kinds of डाला और soil. उससे एक पेड़ निकला है. कोई ज़्यादा मेहनत नहीं किया. Some places, no matter what you did, you couldn't get a mango to grow. लेकिन कुछ जगह पे आप कुछ Anything. भी मेहनत कर लीजिए आम का पेड़ नहीं निकलता है. They can grow in the desert, like now in Dubai. If you go to Dubai, there's so many trees. तो अभी दुबई में आप देखेंगे तो कितने पेड़ हैं वहाँ You पे. walk along any road, and so many flowers. किसी भी जगह पे आप चलिए वहाँ पे फूल भी खिले हुए हैं. But there's hoses everywhere, and every tree has the water dripping, and everywhere, and they have to recycle all the sewage water, and then, you know, it's a huge endeavor. लेकिन इसके लिए It बहुत doesn't ज़्यादा just प्रयास happen किया by उन्होंने. throwing some seeds on the ground. बहुत अधिक प्रयास के बाद ऐसा हुआ है. But, you know, and here we can go out and chant, and, you know, mobs of people come around. लेकिन यहाँ पे भारत में इतना आसान है. बाहर जाते हैं हम हरिनाम करते You हैं build तो a बहुत लोग temple शामिल and हो it जाते हैं. fills up right away, you know. In other places, it's not like that so much. But still, it's happening everywhere. Something is, so many books are distributed. तो इतनी आसानी से बाकी जगह पे नहीं होता है. फिर भी बहुत ही तेज़ी से ये आंदोलन फैल रहा है. And Lord Chaitanya it's predicted, Prithivite yate yata nagaradigram, that everywhere, in every town and village, my name will be chanted. ये चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी की थी कि हर नगर और हर ग्राम में So मेरा we have a नाम का long way प्रचार to go, but it's happening. हो. ये हो ही रहा है और भी है करने को. Now they have a Nagaradigram campaign or something. Right? Is that what अभी they एक call it? नगर आदि ग्राम ऐसा एक Devakinandan was showing some pictures. They just go in a bullock cart, and hundreds of people, you know, and this tribal preaching, same thing, everywhere. बहुत Bombay, everywhere. Delhi, everywhere. सभी जगह 17 पे ऐसे temples in Delhi. नगर आदि ग्राम का जो कैंपेन है वो चल रहा है. बैलगाड़ी में जा रहे हैं. हर जगह पे ये फैल रहा है. Radhaparta Sardi, for many years, they just moved from one very small house to another. तो राधा पार्थसारथी जी दिल्ली में हैं. वो बहुत दिन तक एक घर से दूसरे घर पर ऐसे जा रहे थे. But, you know, somehow they kept preaching, and then now लेकिन अभी आप every देखेंगे day तो कितना someone's donating another temple. लेकिन कितना विशाल भव्य मंदिर बना है. So this is why we want to really honor Srila Prabhupada and remember, you know, what he did. इसीलिए हम प्रभुपाद का स्मरण करते हैं और याद करते हैं उन्होंने कितना किया. We cannot pay back, but we want to try to pay back. हम उनको वापस नहीं दे सकते ये सब. But the only way we can pay back is by taking it up and ये trying स्वीकार to, इस मार्ग को स्वीकार करके ही हम अपनी कृतज्ञता उनके प्रति प्रकट कर trying to सकते हैं spread it as much as possible. और जितना हो सके उतना प्रचार करके. So the Kartika is the time we can get more benefit for our whatever we do. जो भी हम So we चेष्टा try to करते do हैं more.
you know. जो भी जितनी भी चेष्टा करते हैं उसका अधिक हमें लाभ मिलता है कार्तिक महीने में, तो हमें बनता है कि अधिक से अधिक करें. Like, I don't know if you have this in India, but these sales the department stores have. So they have in America something called Black Friday. अमेरिका में एक ब्लैक फ्राइडे नाम का You एक heard of सेल that? होता है. It's the day after Thanksgiving. They're copying it here. So, you know, people camp out in the street, sometimes for a couple days. And it's cold, you know, to be the first one in the store. तो उसमें वहाँ पे जो चीज़ें जो सेल में आती हैं उसको सबसे पहले प्राप्त करने के लोग ठंडी मौसम में भी 2-3 दिन तक वहाँ पे वेट करते हैं लाइन में. And almost every year somebody gets killed in the rush, you know. और ये सब भगदड़ मस्ती तो कुछ लोग मर भी जाते हैं. And they go mad and they buy all kinds of stuff, and when they get home, what did I buy this for? और वो पागलपन में Just 'cause it कुछ was भी cheap, खरीद they लेते go, हैं "Oh, और घर जाके Maharaj, देखते grab हैं ये it." क्या ले लिया. Whatever they can get. जो भी मिलता है वो ले लेते हैं. Hopefully we could be like that for Kartika and just, you know, काश just sit down and read for hours, chant, and get out on Harinam and, you know, distribute prasadam or do something. You know, just go mad for the mercy that's available. काश ऐसे हम कार्तिक मास के लिए उतनी पागलपन दिखाते. In Middle East, in the UAE, Dubai, that area, they go house to house. And they have a little setup. They have a little altar with Radha, you know, Mother Soda and Krishna. And they have a little book with the pastimes, and they set that up and they chant the Damodarastakam, and the whole family or all their friends. And they'll go to like 5,000 houses in 1 month. They have many teams. तो ऐसे And then I went with one year, and people were, you know, in the apartment buildings. So you'd be in one apartment, and then next other people would, you know, come to my house. यूएई में एक ऐसा अलग लोग घर We'd be घर में out till जाते 2 हैं. in the morning. Yeah. You know, people work late and stuff. Going to the shops. So just introduce just that simple thing. But they give some, you know, literature and books, and they introduce people, and they make a lot of devotees. Because Hindus, but many, they don't even know about Krishna. They only know Devas. तो कहने के लिए तो This हिंदूज introduces हैं them. लेकिन उनको कृष्ण के They बारे में get this वेदों के बारे special में कोई mercy. जानकारी नहीं है. So that's what we're trying to do, that's all. तो हमारा प्रयास ये रहता है जैसे मिडिल ईस्ट के जो देशों में वहाँ पे घर घर जाते हैं, पूरा दामोदर अष्टक के बारे में एक किताब लेके जाते हैं, एक ऑल्टर लेके जाते हैं यशोदा दामोदर का, और वहाँ पे उनके घर पे ऐसा दामोदर अष्टक और दिया जो अर्पण करने के लिए Take प्रेरित advantage करते of हैं. this special sale, you know. तो ऐसे स्पेशल विशेष सेल लगी है. There's extra mercy is available, प्रचुर मात्रा में यहाँ पे, and there's no limit. The more we take, the more there is. जितना हम लेते हैं उतना और अधिक That's the मिलता है इस nature मास of में. the storehouse of love of God. And तो the ये more you पूरा distribute it, the more you take it, the more it increases. जितना हम बांटते हैं, जितना हम लेते हैं उतना और मिलता है. So I think we'll stop now and we can do this because so many people to offer lamps can take a while. अभी हम दिया अर्पण करेंगे. Huh? Yeah, questions. किसी if को you want. प्रश्न है तो महाराज से आप पूछ सकते हैं. Prashna. Just live, but I'm just showing the crowd. When did this temple start? 2 years. This is somewhere in Pune, but just letting the people that are watching know. Maharaj, one devotee has a question here. He's saying, we all get tired so quickly. How come it's like more than 50 years for you, but you don't seem to be tired? You are still going on. How does this happen? But I'm not tired. I'm very tired. I don't know. It's, you know, we're just being carried along by Krishna. And तो महाराज को
प्रश्न ये पूछा गया कि हम तो बहुत जल्दी थक जाते हैं और आप तो 50 वर्ष से पूर्व इस मूवमेंट में हैं, आप तो थके हुए बिल्कुल नहीं लग रहे। तो महाराज कह रहे हैं कि पता नहीं, मुझे भी बस कृष्ण ही मेरा निर्वाह कर रहे हैं। Personally, I feel like now, compared to, years ago, I feel like like I used to be swimming or something. Now I'm treading water. Treading water, just staying afloat. But somehow the current is, yeah. तो पहले वो स्विमिंग करते थे, अभी लग रहा है जैसे बह रहे हैं किसी प्रवाह में। I don't know if you've been to Mayapur, but there's one village called Nirdoya. मायापुर में निर्दोय नाम का एक ग्राम है। Mother Sachi named it that. तो माता सची ने उसका ऐसा नाम दिया था। That's where Nimai went, and from there he crossed the Ganga and he went to take sannyas. तो वही एक स्थान है जहाँ पे निमाई पंडित ने गंगा पार की थी और संन्यास स्वीकार किया था। So she was asking everybody, "Where's my son? Where's my son?" Everybody said, "I don't know." So she thought they were hiding him. तो हर जो भी व्यक्ति थे उनसे पूछ रही थी मेरा निमाई कहाँ है, और कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो उनको लगा कि सब निमाई को छिपा रहे हैं। So we went there one year with, the parikram, just by एक बार bus. गया था परिक्रम के लिए Jai Pataka Maharaj. जय पताका महाराज के साथ। He's very adventurous. So at that time the Ganga was flowing really strong. तो उस समय गंगा का प्रवाह बहुत ही तेज था। This upstream. So we just jumped in and went back to Mayapur. तो हम जैसे ही अंदर गए प्रवाह ऐसा तो वापस मायापुर बह गए हम। And the current was so strong, it just zipped right along. So, and the energy of all these devotees all over the world, it just carries us along, the same way. तो उसी प्रकार ये जो शक्ति है इन सब इतने सारे भक्तों का, उसी के द्वारा मैं बह रहा हूँ। I was just in Japan and I was very tired, and they were having a Rath Yatra, तो एक बार जापान में, which is very small, but for us, for Japan, it's really big, 50 devotees. तो वहाँ पे रथ यात्रा थी, तो मैं उस समय थका हुआ था, 50 भक्त थे वहाँ पे। And we went to one house first, and I was thinking, I don't know if I went, I know if I have to go, So, and I got there and there was a lot of devotees, and they were dancing and chanting, and I immediately just forgot that I was tired. तो उस समय मैं इतना थका हुआ था, मुझे लग रहा था कि शायद मैं रथ यात्रा पूरी कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन वहाँ पे भक्तों का समाज ऐसा था, सब कीर्तन कर रहे थे और मैं The पूरा कर waves पाया। of the ocean of devotion is, it just carries you along. तो भक्ति की जो लहरें हैं उसके द्वारा मैं बहता हुआ चला The गया। current of love of Godhead, there's so many devotees chanting everywhere. That's the only reason. इतने सारे भक्त जो कीर्तन कर रहे थे, उससे मुझे सशक्तिकरण मिला। And then remembering what Prabhupada did. तो उस समय मैंने प्रभुपाद का स्मरण किया। You get tired just reading about it. It's so exhausting how he traveled. Especially for a few years when all the new temples were opening. So we do that whatever little bit we can, all of you. Don't worry. Prabhupada said that devotees get more and more energy. They don't want to give up. प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों को। One more? Any more? और कोई प्रश्न? Hare Krishna. My question is about Bhagavad Gita, Prabhuji. In India, still people see Bhagavad Gita as a religious book, not as a spiritual book for everyone. So how do we deal with this situation? Even when we go to schools, colleges. Bhagavad Gita is still seen as a religious book and not a spiritual book. How do you deal with this situation? What do you mean, religious, not spiritual? It's not a religion. Well, these words, religion, now there's a big thing. I'm spiritual but not religious. I think they even have an acronym like SBNR or something. Because of the organized religion, people used to tell us, I don't like organized religion. We said, don't worry, we're not organized. Now it looks like we are, but
Because there's so many cheating things, but in the name of spiritual, there's even more cheating. More rascals cheating people. But the Bhagavad Gita is way beyond any of that. Actually, one devotee in Israel, he's a big scholar. तो प्रश्न ये था कि भगवत गीता को लोग धार्मिक ग्रंथ मानते हैं लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं मानते, हम कैसे प्रचार करके इसका दूर कर सकते हैं। तो महाराज ने कहा कि ये धार्मिक और आध्यात्मिक ये जो फ़र्क किया है लोगों ने शायद डर की वजह से किया है, क्योंकि धर्म के नाम पे काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ किया जा रहा था। लेकिन कह रहे हैं कि अभी आध्यात्मिकता के नाम पर भी काफ़ी कुछ शोषण हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं भगवत गीता इन सभी चीज़ों से परे है। And his mission is because in academia they think the Bhagavad Gita is religious, तो इज़राइल में not philosophical, religious. तो इज़राइल में एक विद्वान हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे ये माना जाता है कि ये धार्मिक है और ये दार्शनिक नहीं है। So his mission is to show that the Bhagavad Gita is philosophical. तो वो पूछ He's रहे हैं, written several books that have been very, very well received. So, but spiritual, Krishna is the supreme spirit, he's the origin of everything. But the Bhagavad Gita it's like what you take is, you get what you put into it. लेकिन भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो हम उसमें देते हैं वही हमको उससे बाहर निकलता है, जिस नज़र से देखेंगे वैसा हमें। I heard one guy speaking, he was very proud that he was a big Bhagavad Gita scholar, and he was saying the whole purpose of the Bhagavad Gita is jnana. तो मैंने एक विद्वान को देखा तो उसने कहा कि भगवद गीता का पूरा उद्देश्य ज्ञान है। The Prabhupada said, Krishna never said, Jnanamam abhijananti. कृष्ण ने कभी नहीं कहा। Bhaktimam abhijananti. Bhakti is spiritual, love for Krishna. तो भक्ति जो है वो आध्यात्मिक ही है, भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को हम कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। Bhagavad Gita is not, for some particular so-called religion organized, for everybody. भगवद गीता सभी के लिए है। You can become a better Christian, a better Jew, or anything by understand. And many people take the karma yoga part of the Bhagavad Gita and they're becoming millionaires teaching that. Many. तो ये Not spiritual, not religious. तो ये भगवद गीता तो How to जो live, how to be happy in this world. तो भगवद गीता को लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं कि कैसे मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे, कैसे सुखी रह पाएंगे। लेकिन भगवद गीता की एक खासियत है कि इसे सभी व्यक्तियों के लिए लागू होता है। एक क्रिश्चियन भी अच्छा क्रिश्चियन बन सकता है, एक मोहम्मदन भी अच्छा मुस्लिम बन सकता है। So anyway, we just encourage people read it. Most people that say things about the Gita, they haven't read it. तो बहुत लोग They जो just भगवद say गीता में something, it says that. But let them make experiment, read it. बहुत लोग भगवद गीता के विषय में बोलते every हैं, day for a week, see what happens. उन्होंने पढ़ा ही नहीं है भगवद गीता को, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग उसका अध्ययन करें। Okay, thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So when we sing this song and then, read the translations, understand what it's all about. His Holiness Kavichandra Swami Maharaj की, श्रील प्रभुपाद की। तो अभी हम दामोदराष्टकम गाएंगे और उसके बाद सबके लिए प्रसाद। Yeah, but someone else can sing.
नमामीश्वरं सच्चे